friends, I am Chandana and welcome you to our channel TrustLogics tutorial. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज वॉच इट टिल एंड. So now let's start. So today's first question is, who inaugurated the leadership forum on financial technology via virtual conference? किसने financial technology virtual conference के थ्रू inaugurate किया है? So here are the options. Option number 1 Narendra Modi, option B Amit Shah, option C Jitendra Singh, option D Rajnath Singh. So, I repeat my question, who inaugurated the leadership forum on financial technology via virtual conference? So, here the correct answer is option number A, Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Narendra Modi inaugurated a leadership forum on financial technology FinTech via virtual conference. This is one of the first edition of the summit. इस समिट का फर्स्ट एडिशन था जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है लीडरशिप फोरम ऑफ फिनटेक. एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान इसे लॉन्च किया गया. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच कंट्री जॉइंड G20 ट्रोएका विद इंडोनेशिया एंड इटली? हाल ही में किस देश ने ज्वाइन किया है G20 ट्रोइका विद इंडोनेशिया एंड इटली? सो हियर आर द ऑप्शंस, इजराइल, साउथ अफ्रीका, India and Maldives. So here the correct answer is option number C. India joined the G20 Troika. With this move, India has started the procedure for taking over the G20 presidency next year. So, what is the correct answer? Correct answer is India. India जो है, इंडिया ने G20 ट्रोइका ज्वाइन किया है और इस मूव के साथ इंडिया जो है इस प्रोसीड्योर में आगे बढ़ेगा. G20 प्रेसिडेंसी नेक्स्ट साल इंडिया ही हासिल करेगा. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री जॉइन बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज CARAT विथ USA? किस देश ने बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज CARAT USA के साथ ज्वाइन किया है? सो हियर आर द ऑप्शंस, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स, इंडिया. आई रिपीट माई क्वेश्चन, which country joined bilateral maritime exercise CARAT with USA? So options are Bangladesh, Myanmar, Maldives, India. So here the correct answer is option number A. 9-day joint maritime exercise between Bangladesh and United States has commenced in the Bay of Bengal. ये 9-day joint maritime exercise जो है ये बांग्लादेश और यूएस के बीच में हो रहा है और ये कहाँ पे हो रहा है? ये बे ऑफ बंगाल में कमेंस किया जाएगा. So now we will move to the next question and here goes the next question of the day. Which bank has launched a feature-rich savings bank for the product for women Mahila Mitra Plus? Women Mahila Mitra Plus के लिए किस बैंक ने लॉन्च किया है एक feature-rich savings bank? So here are the options, SBI, Federal Bank, IDBI Bank, ICICI Bank. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, IDBI बैंक और ICICI बैंक. तो किस बैंक ने ये लॉन्च किया है? सो हेयर गोज द करेक्ट आंसर एंड हेयर द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. प्राइवेट सेक्टर लेंडर फेडरल बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ फीचर रिच सेविंग्स बैंक प्रोडक्ट फॉर वुमेन. प्राइवेट सेक्टर लेंडर ने फेडरल बैंक लॉन्च किया है एक फीचर रिच सेविंग्स बैंक प्रोडक्ट फॉर वुमेन. एक वुमेन के लिए एक फीचर्स रिच सेविंग्स बैंक प्रोडक्ट लॉन्च किया है प्राइवेट सेक्टर लेंडर फेडरल बैंक ने. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन बेस्टोड विद द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द वर्ल्ड एथलेटिक्स? वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? सो हियर आर द क्वेश्चंस, अंजू जॉर्ज, स्मृति मांधना, श्रेया श्रीवास्तव, तान्या सिंह. किसे दिया गया है वुमेन ऑफ द ईयर वर्ल्ड अवार्ड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स? So, here the correct answer is option number A. Legendary Indian athlete Anju Bobby George has been bestowed with the Woman of the Year award by the World Athletics for grooming talent in the country and advocating gender equality. Legendary Indian athlete Anju Bobby George को मिला है Woman of the Year award World Athletics की तरफ से. क्यों? क्योंकि उनमें जो टैलेंट है वो देश में निखारा गया.
किस चीज़ के लिए? एडवोकेटिंग जनरल इक्वालिटी. TrustLogics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs very easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our TrustLogics website and mobile app. So now goes the next question, and here the next question is, which state bagged gold medal in the 40th Indian International Trade Fair? IITF में किस स्टेट को गोल्ड मेडल मिला है, जो कि कहाँ पे हेल्ड हुआ था? इट वॉज हेल्ड एट प्रगति मैदान इन दिल्ली फॉर एक्सेलेंस इन डिस्प्ले इन स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी पेविलियन कैटेगरी. ये दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ था. सो हेयर आर द ऑप्शंस: बिहार, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिहार. Bihar bagged gold medal in the 40th IITF held at Pragati Maidan in Delhi for excellence in display in state government और union territory pavilion category. State government और union territory pavilion category में excellence in display का खिताब बिहार को मिला है. बिहार ने जीता है 40th IITF, जो कि प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ था. So now goes the next question, and here the next question is, which organization has been ranked number 1 cooperative among the top 300 cooperatives in the world, withholding its position from last year? लास्ट ईयर से अपनी पोजीशन में रहते हुए किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल भी नंबर 1 कोऑपरेटिव का खिताब जीता है among the top 300 cooperatives in the world? So here are the options: IFFCO, AMUL, Mother Dairy, Milk Dairy. So here the correct answer is option number A, IFFCO. The Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited, IFFCO, has been ranked number 1 cooperative among the top 300 cooperatives in the world, withholding its position from the last year. So goes the next question, and the next question is, who has been appointed as the chairman of India Tourism Development Corporation? किसे अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ ITDC? सो हेयर आर द ऑप्शन: संबित पात्रा, निखिल सिंह, जितेंद्र सिंह, राहुल बजाज. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ITDC, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा को चेयरमैन बनाया गया है ITDC का. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू अ पीरियोडिक लेबर force survey by the National Statistical Office NSO, unemployment rate in India rose to how much percent in January to March 2021? Periodic Labor Force Survey जो कि NSO की तरफ से किया गया था, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जनवरी टू मार्च 2021 में कितना बढ़ गया? So here are the options: 8.8%, 8.5%, 9.0%, 9.3%. So here the correct answer is option number D. The urban unemployment rate has increased to 9.3% in January-March 2021 period from 9.1% in the year ago period, according to a periodic labor force survey by the NSO. NSO की तरफ से ये labor force survey के बाद ये ऐसा हुआ है. So now goes the next question, and today's last question. As per S&P Global Ratings, what is India GDP growth for FY22? S&P ग्लोबल रेटिंग के अकॉर्डिंग इंडिया की GDP ग्रोथ FY22 में कितनी रही? सो हेयर आर द ऑप्शंस: 8.8%, 8.5%, 9.5%, 9.0%. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 9.5%. S&P Global Ratings said in a note that it has kept India's economic growth forecast in the fiscal year to March 2022 unchanged at 9.5%, but raised its predictions for the subsequent year on broadening out of the recovery. S&P Global Ratings के अकॉर्डिंग इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फिजिकल ईयर मार्च 2022 में अनचेंज रहा और 9.5% ही रहा. तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. Subscribe our TrustLogics tutorial YouTube channel for getting more informative videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.